preconditions and the post conditions of the test, and it is developed for specific test scenarios to verify any requirement under certain test environment. So you need to develop test cases for each test listed in the test plan, जो कि हमने test plan में बात की थी कि उसमें test cases जो हैं they were one part of the test plan. As far as the types of the test cases are concerned, चार मैंने यहाँ पे ऐड की हैं types of test cases. Number one is called functional test cases. Similarly, computation and boundary analysis test cases. Cause and effect और cause effect इसको कह सकते हैं, and logic test cases and security test cases. अच्छा जनाब, डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली देयर इज़ नो स्टैंडर्ड और सिंपल रूल for designing the test cases, but there are some key considerations for designing a test case. Test case should be designed for testing each function with expected results. Similarly, the test cases should be repeatable. That is, when a test case is you may say that it should give the same results each time when test case is run. Expect the real-time environment. Similarly, test cases should be organized and developed around system requirements and for key functions of the system. टेस्ट केस में जो टिपिकली हम एडअप करते हैं टेम्पलेट और स्ट्रक्चर जो चीज़ें उसमें एडअप की जाती हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट केस के अंदर उसमें टेस्ट केस आईडी है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम होगा, इसी तरह से टेस्ट डिपेंडेंसी सेटअप है, सिमिलरली इनपुट डाटा रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट स्टेप्स विल बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट केस. एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का एक है कॉलम और फिर पास और फेल है. सिमिलरली टेस्ट प्रोसीजर्स एंड प्री रिक्विजिट्स, डेट ऑफ क्रिएशन एंड द टेस्ट केस इज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सनल, उसका इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है. डेट ऑफ एग्जीक्यूशन and the test environment may also be added in some of the test case templates. तो ये एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर हमने दिया है कि टेस्ट केस में कौन सी किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हम ऐड करते हैं और उसका स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न या टेम्पलेट क्या है. अच्छा जनाब, नेक्स्ट वी मूव टू द टेस्ट सिनेरियो. द थर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ये थर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है. टेस्ट सिनेरियोज आर बेसिकली यूज्ड टू एंश्योर दैट ऑल प्रोसेस फ्लोज आर टेस्टेड फ्रॉम एंड टू एंड. एक तो बात ये होगी. And particular area of an application can have as little as one test scenario to a few hundred scenarios depending on the magnitude and the complexity of the application. The term test scenario and the test cases are used normally interchangeably. However, the main difference being that the test scenarios have several steps, however the test cases have a single step. When viewed from this perspective, the test scenarios are test cases, but they include several test cases and the sequence that they should be executed, and each test is dependent on the output from the previous test. This diagram which you are looking at the moment, मॉड्यूल्स ए है, मॉड्यूल बी है और मॉड्यूल सी है, एंड ईच मॉड्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ सिनेरियोज in some sequence in which they will be executed. So module A is consisting of two scenarios, scenario 1 and scenario 2. Likewise, module B is also having two scenarios, and similarly module C is also
having. So they are grouped, logically grouped together, in which they can be performed in more organized way. So इस मॉड्यूल सी में भी इसी तरह से हमने दो सिनेरियोज के एग्जांपल ली.